Today I am going to explain IPC 106 right of private defense. That right of private defense against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person. If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk. And there is one illustration. Suppose A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his fight. There is an illustration that suppose that A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. This section removes an impediment in the right of private defense. The impediment is the doubt in the mind of the defender as to whether he is entitled to exercise his right even when there is a possibility of some innocent persons being harmed by his act. The section says that in the case of an assault reasonably causing an apprehension of death, if the defender is faced with such a situation where there exists risk of harm to an innocent person, there is no restriction on him to exercise his right of defense, and he is entitled to run that risk. Friends, there is a conclusion of this that to justify the exercise of this right, the following are to be examined: the entire accident, next injuries received by the accused, next imminence of the threat to his safety, further injuries caused by the accused, and next circumstances whether the accused had time to recourse to public authorities. Right of private defense is a good weapon in the hand of every citizen to defend himself. This right is not of revenge but toward the threat and imminent danger of an attack. But people can also misuse this right. It's very difficult for court to find out whether this right had been exercised in good faith or not. दोस्तों, अब मैं आपको आईपीसी की धारा 420 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार
जो कोई धोखेबाज व्यक्ति को धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है और जो एक मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने के सक्षम है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। प्रलोभन की शर्तों और धोखाधड़ी की अनुधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 415 धोखाधड़ी के अपराध को परिभाषित करती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं, धोखा देना एक बेईमानी का काम है जो इससे कुछ लाभ हासिल करने के लिए किया जाता है। धारा 420 आईपीसी धोखाधड़ी का एक गंभीर रूप है, जिसमें संपत्ति के साथ साथ मूल्यवान प्रतिभूतियों के वितरण के मामले में प्रलोभन किसी का करना या स्थानांतरित करना शामिल है। यह धारा उन मामलों पर भी लागू होती है जहां संपत्ति का विनाश धोखाधड़ी या प्रलोभन के कारण होता है। इस धारा के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा प्रदान की जाती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और व्यक्ति को जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संपत्ति की सुपुर्दगी को प्रेरित करने में धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित अवयवों को साबित करने की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व झूठा था क्या?